So hello students, my name is Bhabani. समस्त को आम चैनल साइड स्टडी क्लासेस को स्वागत। आज तुम मन को पई वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक जनरल अवेयरनेस रो पार्ट 9 बा सेट 9 क्वेश्चन हम नै के आछे एवं सेतिरे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना करिवा एवं ताकू देखिवा जे कोन कोन सब इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहउची एवं तार एवरी डिटेल्स विषय देखिवा। पूर्व क्लास भली आमे आज क्लास रे निहाती भाबरे 10 हला कोन एजुकेशनल रिलेटेड क्वेश्चन 5 वाला जनरल साइंस क्वेश्चन 5 वाला हिस्ट्री क्वेश्चन एंड 5 वाला पॉलिटी क्वेश्चन आपण मान को कहिवा अनुसार आमे ऐड करछु। এবং ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ ମିଳିବ। ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ଭଲ ବି ଲାଗିବ ଯେ ଯାହା ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି କିଛି ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେଟା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମ WhatsApp ନମ୍ବର 7894072404 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏନି एजुकेशन रिलेटेड क्वेरीज एनी एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज एवरीथिंग ओके। ता सहित कहा डिमोटिवेटेड लागुଥିଲେ भी किछि भी एनीथिंग एनी क्वेरीज ओके। ता सहित तुम माने छ हम चैनल को सब्सक्राइब करिवे जदी नुवा अछ जो माने पुराना छ अछ ताले तुम माने हम चैनल को सब्सक्राइब करथियो निश्चित मात्रा रे एवं शेयर करि दबो ठीक अछि। एडा हमर टेलीग्राम हैंडल एतरे आपण माने जॉइन नै परिवे एडा हमर YouTube हैंडल एतरे आपण माने स्कैन करी विजिट करि परिवे ठीक अछि। तो एति कि थिला तुम मान को पई ता सहित आउरी बहुत ही बड़े इंपोर्टेंट टॉपिक हैला छ कोन ना एग्जाम बहुत ही पाखो को चली आसला। हाईएस्ट तुम पाखे 40 डेज रहिबो 40 टू 45 डेज ओके 40 टू 45 डेज रहिबो एग्जाम होआ पई बा हाईएस्ट ताले 45 डेज तो मो भाबुची 45 डेज हाईएस्ट तो सेति पे जो मानकर एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट हेनी से माने स्टार्ट कर दियंतु जो मानकर प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट माने आरंभ करचंदी से माने निजर प्रिपरेशन को जल्दी बढ़ांतु तापरे जो माने आगुरु स्टार्ट करचंदी तमे से माने रिवीजन करंतु ओके रिसोर्सेस को कम रखंतु प्रैक्टिस अधिक करंतु ठीक अछि। ता सहित छ आज रा हम प्रथम क्वेश्चन देखिबा ओके प्रथम क्वेश्चन देखिबा जे कोन अछि देखो कौन अच्छी छुआ प्रथम क्वेश्चन कोई द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सिलेक्ट which of the following department as a center of advanced study in education CSC in the year 1963 faculty of education Gwalior faculty of education Bhopal faculty of education and psychology Mumbai faculty of education and psychology Vadodara okay। से कोई चीज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सिलेक्टेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट को से सिलेक्ट करथिला एज अ सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन सीएससी इन द ईयर 1963 कोनटा हबो व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर जल्दी मात्रा रे कमेंट सेक्शन रे कहंतु ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इन बड़ोदरा ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which of the following system of education based on accepted structure of 10th plus 2 plus 3 was proposed by National Policy on Education 1986 unitary system of education social system of education national system of education and primary system of education बोला हमरे क्वेश्चन बुझो से कोची which of following system of education based on the accepted structure of 10th plus 2 plus 3 was proposed by national policy on education 1986 ये propose कर दिला छा unitary system of education social system of education national system of education and primary system of education which one is the correct answer कोटा छा यारो सही उत्तर हबो तो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन द 1986 तो सही प्रपोज करथिला 10 plus 2 plus 3 ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो छा the concept of national system of education implies that up to the given level all students irrespective of caste creed location or sex having access to the education of the comparable quality ऑप्शन ए रे गला एटा माने कोनटा नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन से तो माने इंप्लाइज होची तो आउथरे पढि दोछ देखो ऑप्शन ए रे कोन कहै छी ना all student irrespective of caste creed location or sex have access to the education of comparable quality ऑप्शन बी हला all students irrespective of caste creed location or sex something may not have access to education of a comparable quality all students irrespective of caste creed location and sometime with the gender bias having access to the education of a comparable quality all students based on caste creed location sex having have access to
education of a comparable quality. Which one is the correct answer? मतलब सब गुड़ा लागू जी ठीक अछि बोधे have access to अछि गोटे and may not have access to अछि गोटे आउडे with the gender bias having access to education and access to the education comparable qualities. Okay, which one is the correct answer? छुआ कोटा भला भाବରେ भाबी को निश्चित मात्रा रे कोटा आव छुआ तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर all students irrespective of caste creed location or sex have access to the education of a comparable quality এটা নিহাতি ভাବରେ টিকে মনে रखि दबो ठीक अछि এটা টিके মনে रखि दबो UNESCO facilitates the development of education-based policies in the response to the new trend or developments in the higher education so as to achieve minimum level of learning, common minimum program, Millennium Development Goal, minimum education program. Which one is the correct answer? छुआ एतिमध्यरु कोनटा ठीक हबो ना Millennium Development Goal माने UNESCO facilitates the development of evidence-based policy. Okay, for responsible new trends and development in the higher education कौन हबो ना Millennium Development Goals. Okay, कोनटा अचीव करछि ना Millennium Development Goals पे अचीव करछि ठीक अछि then next question देखो which of following skill was proposed regarding secondary education in revised program of action 1992? Which one is the correct answer? Which of the following skills was proposed regarding secondary education in revised program of action 1992? Which one is the correct answer? कोटा छुआ यार सही उत्तर हबो which of the following skill was proposed regarding secondary education in revised program of action 1992 रीडिंग स्किल राइटिंग स्किल कम्युनिकेशन स्किल कंप्यूटर स्किल कोटा हबो छुआ जल्दी ऑप्शन ए बी सी डी रे आंसर दियंतु जो माने भी देखछन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु ता सहित आंसर दवा पे मोस्ट ट्राई करंतु कोटा हबो छुआ कंप्यूटर स्किल ठीक अछि Which of the following year was new education policy placed before the Indian Parliament for the consideration and approval? 1968, 1967, 1986, 1987. माने new education policy Indian Parliament रे placed ହେଇଥିଲା केबे माने कोन वर्ष रे approval दिया ହେଇଥିଲା? Which one is the correct answer? Option C is the right answer 1986. Okay. The national policy on education भला भाବରେ बुझो कुछ क्वेश्चन the national policy on education 1986 and the program action 1992 emphasized the adoption of the regional languages as the medium of instruction at which of the following stages of education? University, primary, upper primary, high school. Which one is the correct answer? कहाँ prioritize दिया इतना? Option A university. Okay, university. Which of the following statement is correct with the reference to the National Council of Education Research and Training? It is an autonomous organization established in 1961. It is a private organization established in 1980. It is a private organization established in 1961. It is an autonomous organization established in 1980. Which one is the correct answer? भलो भाବରେ को कोनटा हबो छ ऑप्शन ए बी सी डी मध्यरु ठीक अछि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1961 ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो UNESCO facilitates the development of evidence-based policies in the response to new trends and developments in the higher education so as to achieve माने कोनटा एटा बोधे शायद ही पुणी थरे क्वेश्चन हैला माने कोन ना रिपीट ही जी रिपीटेड क्वेश्चन ओके रिपीटेड क्वेश्चन मिलियनियम डेवलपमेंट गोल्स ओके The report committee under the chairmanship of Janardhan Reddy in 1992 provide a base for emergency of which of the following program? Which one is the correct answer? National System of Education, Minimum Education Program, Program of Science Education, Revised Program of Education. Which one is the correct answer? एति मध्यरु छुआ कोनटा ठीक हबो? Option A, B, C, D. जल्दी मात्रा आंसर दियंतु आंसर हबो छुआ Revised Program of Education. Sorry, action. Next question देखो. Which of the following is a protein? Natural rubber, starch, cellulose, and none of these. Which one is the correct answer? Protein है natural rubber हो ठीक है
Wood is the main raw material for the manufacture of. Wood is the main raw material for the manufacture of paint, paper, ink, gunpowder. Which one is the correct answer? Paper. Paper. Rayon is a chemically a dash. এটা তোমার 8th class ର question, 8th class ର general science ର question ରୁ ଉଠିଛି. Cellulose proteins, glucose and amylase. Amylase. Option A is the right answer. Rayon is the cellulose. Okay. Rayon is chemically labeled cellulose acetate, which is a polymer of a semi-synthetic type. It is called semi-synthetic because it has a natural cellulose protein portion that in combination with the acetate gives cellulose acetate. Okay. Optical fiber are mainly used for which of the following? Musical instrument, food industry, weaving and communication. Which one is the correct answer? एथि मध्यरु कोउ माने ऑप्शन टा ठीक ही होबो. कम्युनिकेशन पाई ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पाई यूज होता है. बुझिपाले एथि जमाने भी पढ़ी परिबे एक्सप्लेनेशन लिखा है स्क्रीनशॉट मध्ये मारि परिबे. The major ingredient of leather is collagen, carbohydrate, polymer, nucleic acid. Which one is the correct answer? Collagen. Okay, collagen is the right answer. Leather is the durable and flexible material created by the tanning animal, raw hide and the skins. The major ingredient of leather is collagen. Who presided over the Lahore session of the Indian National Congress in 1929? Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose and Indira Gandhi. Eta modern history question. Who preside over the Lahore session? Eta Lahore session upre question thila je kete mosiya रे हितला question thila कोन स्थान रे हितला लाहौर रे हितला question thila एबे ताको किए ताको preside करथिले. बहुत ही बढ़िया question आसी ठीक अछि. कोइ किए हबो छुआ? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. जवाहरलाल नेहरू. ठीक अछि. पूर्ण स्वराज ର ନାରା ଦେଇଥିଲେ ସେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ର ନାରା ଦେଇଥିଲେ. ठीक अछि. Who among the following presided over the Lucknow session of Indian National Congress in 1916? Dadabhai Naoroji, Ambika Charan Majumdar, Bal Gangadhar Tilak, Sarojini Naidu. Ambika Charan Majumdar. Okay, Ambika Charan Majumdar. Ambika Charan Majumdar preside over the Lucknow session in 1916. Majumdar is a prominent leader and a member of Indian National Congress, played a significant role in the session as its president. Okay. Who preside over the annual session of Indian National Congress held in Calcutta 1906? Very important VVI question. आरटा भी जवाहरलाल नेहरू टा VVI थिला, एटा भी VVI. सरोजिनी नायडू, जॉर्ज यूल and दादाभाई नारोजी, मोहनदास करमचंद गांधी. एटा आंसर पर क्लियरली सॉन अछि दादाभाई नारोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. 1906 रे से प्रेसिडेंट हितले. ठीक अछि. The Grand Old Man of India was the prominent Indian nationalist, social reformer and the first Asian to be elected to the British Parliament. He played a significant role in the early years of the Indian National Congress and served as its president on 3 occasions, including the Calcutta session 1906. The Quit India Resolution was passed by All India Congress Committee in which year? 1930, 1942, 1922 and 1946. Which one is the correct answer? कोनटा एथि मध्यरु ठीक हबो. The Quit India Resolution was passed by the All India National Congress Committee in which year? 1930, 1942, 1922 and 1946. Which one is the correct answer? अरे 1942 रे क्विट इंडिया मूवमेंट हेतला जाननो. All India Congress Committee held in the Gwalior Tank Maidan in Mumbai, then it's now in Bombay. Where was the Indian National Congress session held in 1938? But preside over the Subhash Chandra Bose. एटा पूरा क्विट हेतला. एटा क्विट हेतला छुआ. कोन स्थान रे हेतला? Which one is the correct answer? कोन स्थान रे हेतला छुआ? कोन स्थान रे हेतला? जल्दी मतलब कमेंट सेक्शन रे आंसर दियो जल्दी. कोन स्थान रे हेतला? ठीक अछि. कोन स्थान रे एटा हेतला? हरिपुर हेतला ना बॉम्बे हेतला ना लाहौर हेतला
ना कराची रे हेतिला छुआ कोटा यार राइट आंसर हो ओके ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हरिपुर रे हेतिला ठीक अछि हरिपुर रे छुआ एई जो सेशन टा हेतिला तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो छुआ Okay, Haripur session of the Indian National Congress was a significant event in the history of the freedom movement. Subhash Chandra Bose, a prominent leader and advocate of the complete independence, and served as the president of the Congress during the session. Okay. Next question देखो छुआ एटा पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित मात्रा तुम माने कमेंट सेक्शन रे आंसर दबो who is the ex officio chairman of the Rajya Sabha in Indian Parliament? Option A, Union Minister of Parliamentary Affairs. Option B, President of India. Option C, Prime Minister of India. And option D, Vice President of India. The question is who is the ex officio chairman of the Rajya Sabha in Indian Parliament? Okay. इंडियन पार्लियामेंट राज्यसभा को किए ऑफिशियल चेयरमैन ही जानती एटा तो निश्चित मात्रा तुम माने आंसर दबो एटा बहुत इजी क्वेश्चन ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति राज्यसभा रे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ही जानती ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो छुआ इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द स्टेट भारत रे किए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर एति मध्ये कोनटा ठीक हो हेड ऑफ द स्टेट कहा को कहा जाय प्रथम नागरिक कहा को कहा जाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत इजी क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन थिला ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो छुआ कोन अछि हु समन्स एंड द प्रोड्यूस एंड एड्रेसेस सेंड मेसेजेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की छुआ ए सब जिंस समन करता है बा माने प्रोड ऑफ करता है पर प्रोड करता है एवं एड्रेस देता है और सेंड मैसेजेस the Prime Minister of India, the President of India, the Chairman of Rajya Sabha, and the Chairman double divided ହେଇଛି तो आंसर हो छुआ the President of India ठीक है the President of India एटा को सम्मान देथांती नेक्स्ट क्वेश्चन देखो छुआ देखो the President who has the power to send messages to the Parliament on the matter of national importance. These functions are performed by the President as the head of the state and the highest constitutional authority in the country. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया कोटा हो छ यार राइट आंसर मिलिट्री प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री एंड डॉक्टरल फेच माने से कहू छ गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस रो माने हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया सो कोटा हो यार राइट आंसर ठीक अछि माने एडो सब गुटी को छुआ तुम मान को पे प्रीवियस क्वेश्चन करा होची तो क्लास जदी तुम मान को केमिति लागु निश्चित मात्रा कमेंट सेक्शन में जणातो ताछि तो कमेंट करंतु एवं लाइक करंतु वीडियो को शेयर भी मध्य करंतु तो आंसर हो छ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम इंडिया रे चले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट रे को माने एग्जिस्ट करंती ना प्रेसिडेंट राज्यसभा एंड लोकसभा दीस थ्री आर एग्जिस्ट इन द पार्लियामेंट नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास कोटा हो देखो which who among the following personalities addresses both house of parliament at the commencement of the first session after each general election to the lok sabha वाह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अछि माने से कहूची जे छुआ एबे जो जनरल इलेक्शन चलची हो ना नहीं एबे तो इलेक्शंस चलची तो इलेक्शन परे प्रथमे छुआ किए एड्रेस करांती प्रथमे किए सभा को चले थांती काहे ना सतबेले तो केही प्राइम मिनिस्टर की किछि बाछाई न थाए ना सतबेले किए चले थांती प्रेसिडेंट चले थांती हो ना नहीं बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एवं इंपोर्टेंट क्वेश्चन निश्चित मात्रा तुम मन को ई क्वेश्चनटा भल लागियो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज addresses both houses of parliament at the commencement of the first session after each general election to the lok sabha president हो निश्चित मात्रा रे एई क्वेश्चन टा को तुम माने भल लागिथियो एवं निश्चित मात्रा रे कोन ना हमो लाइक कर दे वीडियो टा को ओके the president of India addresses both house of parliament at the beginning of the first session after each general election of the lok sabha the addresses highlights of the government and agendas and the priority of the upcoming session माने upcoming session केमिति चलिबो ता विषय रे कहि थांती ठीक अछि तो एटा थिला छुआ तुम मन करो क्लास एवं क्वेश्चन गुडी को केमिति लागला निश्चित मात्रा रे मते कमेंट सेक्शन में जणैबे क्लास तुम मन को केमिति लागुची कोनोसी विषय रे क्वेरीज रेले निश्चित कमेंट सेक्शन में जणातु तासे तो 7894072404 नंबर रे मध्ये कांटेक्ट करि परिबे शेयर लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दियंतु जा फले हमर एवरी वीडियो नोटिफिकेशन न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपण मान को जल्दी ही मिल परिबो ठीक अछि निश्चित मात्रा रे पढा पढी करंतु एवं समय बहुत ही कम अछि ओके टेक केयर सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास